So, India will now be playing against Singapore tomorrow at the Asian Games in hockey. In the first match that they played, they beat Uzbekistan 16-0, and according to Sandeep, who's obviously the guru of hockey, that Uzbeki saved 10 goals. So you can well imagine the carnage. Now, my first question to you, Sandeep, is that how do these matches stack up, and doesn't it lull a team like India into a false sense of security? 16 nil, my God. I think that's exactly, in a chat with Harinder, I was trying to remind him, that 2018, the last Asian Games in Jakarta, we scored some 70, 80 goals in the entire pool stages. And just by the way, we also beat Japan 8-0 before we went and played Malaysia in the semis, and then we lost. I think it was a shootout, 7-6 Malaysia won after we were leading 2-1 or 3-1, during the game. But again, वो जो point आप बता रहे हैं कि हाँ, it lulls you into a false sense of, that the team is performing well, 15 गोल पड़ रहे हैं, 16 गोल पड़ रहे हैं या 17 गोल पड़ रहे हैं, and then suddenly आपको एक वो वाला मैच मिल जाता है जहाँ जापान हो या मलेशिया हो या कोरिया हो, और हाफ टाइम के ऊपर या 2 या 3 क्वार्टर के बाद 2-2 का स्कोर लाइन हो, and then you're suddenly in that situation where a couple of chances here and there and you lose the game, and then you are out of the Asian Games. I think it's both ways. I think the coach also said, like I asked him, I said, don't you feel that this could lead to something where it just becomes a two-match tournament? He says, I am taking every match as a tough opponent, or should be taking. Like if it's Uzbekistan, I'm going to take them like I'm going to be playing Korea. So the goals have to come. But I think it just boils down to the fact that how can the team be so resilient enough, or can they be resilient enough rather, where they go into a semi-final knowing and understanding that they have to basically win 2 matches. So your entire mindset, everything is geared towards those 2 games. You get those 2 games and you go directly to the Olympics. I think that's the reward. Sandeep, there is a question coming in from Nihal, and it's an interesting question which says, what do you think, which sport will give India a surprise medal which anyone cannot expect? मुश्किल सवाल है आपके लिए. बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर आपको अनएक्सपेक्टेड मेडल मिलेगा तो वो एक बड़े अनएक्सपेक्टेड स्पोर्ट से ही निकलेगा. ठीक है, सो अगर आप अनएक्सपेक्टेड सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि ई गेम्स में काफी कुछ चांसेस हैं हमारे कि को वहाँ मेडल मिल जाए, बिकॉज Korea, China, all these countries are pretty fantastic in e-sport, and e-sport, I think, if I'm correct, they're making their debut here. So एक वो चांस है. दूसरा, मुझे लगता है कि ऐसा कोई ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन है जिसमें हमने आज तक कभी गोल्ड मेडल ना लिया हो. I can only recall silvers in the 100 meters and all, but we really don't have any competition there. So looking at a very unexpected medal, I think you're going to get an unexpected medal from an unexpected sport. So hopefully we get that, and I would surely add just एक और लाइन मैं बस ऐड कर दूंगा कि जो एक्सपेक्टेड स्पोर्ट है उसमें तो आ जाए भर के, अनएक्सपेक्टेड तो फिर बाद की बात देख लेंगे. तो चलिए निहाल, आपके सवाल का जवाब होपफुली आपको मिल गया होगा. तो संदीप का प्रेडिक्शन है कि शायद ई स्पोर्ट से आप हमें इंडिया को कोई मेडल जरूर मिलेगा, और ई स्पोर्ट जो इंट्रोड्यूस भी हुआ है और उसमें कम से कम 3 नाम ऐसे हैं इंडियन प्लेयर्स जिनकी काफी वैल्यू है वर्ल्ड रैंकिंग्स में. तो इंतजार रहेगा स्पोर्ट्स के बारे में. एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बैडमिंटन शुरू होने वाला, आई थिंक कल से शुरू हो रहा है. इंडिया ने आज तक कभी गोल्ड नहीं लिया बैडमिंटन में. मुझे लगता नहीं है जिस हिसाब से टीमें फॉर्म में है इन टर्म्स ऑफ सिंधु और बाकी है मेंस में, फिर भी चांसेस हैं, बट आई एम स्टिल पुटिंग the chances of the Asians, probably somebody from Malaysia or Korea or Japan probably picking up the titles there. लेकिन जो डबल्स है मेंस का, अगर हम उसमें ठीक ठाक खेलेंगे and then maybe we can challenge the Chinese in that. तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमको एक अनएक्सपेक्टेड मेडल गोल्ड मिले, मैं सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ, इट विल बी फैंटास्टिक अगर हम बैडमिंटन में गोल्ड निकालें, क्योंकि आज तक हमने कभी भी बैडमिंटन में गोल्ड नहीं किया. Okay, let's get back to hockey. Now, you had a chat with Harinder Singh, aka our good friend Harry, former coach of India.
and who's now currently based in the US coaching an American team. He speaks his mind very clearly, and he said that India should be wary of any of the final stage matches now, and the teams to worry about would be Malaysia and Korea. So, Sandeep, what is the kind of mental preparation that India should have now, going past Singapore and some of the lesser teams like that? Suddenly, in a semi or a knockout stage, you are faced with a team which can knock India out, which can surprise, and Malaysia could be one of those teams. सीधी सी बात है कि अगर आप हमारी रैंकिंग देखें तो हम अभी वर्ल्ड नंबर 3 हैं, जो लास्ट एफआईएच रैंकिंग्स रिलीज हुई हैं। आई थिंक उस हिसाब से होता क्या है ना कि वेदर इट इज जापान या मलेशिया या पाकिस्तान जो हमारी पूल में है या कोरिया, उनका बस एक मकसद होता है कि कैसे भी हो आप इंडिया को हरा लो। तो पूरा टूर्नामेंट खुल गया। अगर आप इंडिया मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया सेमीफाइनल में हारता है, तो दूसरा वाला जो दूसरे भी सेमीफाइनल्स हैं, they also start thinking that with India out, then at least three teams on the fray. The two who are going to play another semi-final and one that has beaten India to go in. So three teams are actually ambitious enough to think that ये वाला बस हमारी बारी आ गई, अब हम उठा सकते हैं यहाँ से गोल्ड मेडल. I think that probably propels these other teams to kind of utilize opportunities, thinking in a sense tactically that whoever goes number one, they all want to avoid India in the semi-final, which means India has to top the pool. So if India tops the pool, I think in the other half you're probably going to get Korea or Malaysia coming through, whoever is the second team out there. So they are the ones who are probably understanding in the other pool is कि भाई तू जैसे भी हो मत खत्म करो क्योंकि दूसरे पूल में इंडिया नंबर 1 होगा। सो आपका फर्स्ट जो थॉट प्रोसेस है वो है कि इंडिया को अवॉइड करो सेमीफाइनल में। लेकिन फिर भी अगर आप इंडिया के साथ भिड़ भी जाते हो, आप देन you have that is the only opportunity you have of getting a gold medal is to somehow beat India, and I think those matches become very close. हरिंदर सही कह रहा है कि he believes 100% India जीतेगा. He also says that, but he says let's be wary of matches that go into the fourth quarter at 2-2 or 3-3. Now that is a very dicey situation for either of the teams, not only India. Again, there's an interesting point which has come up, which is that where hockey is concerned in the Asian Games, basically people like you who have followed the game so assiduously, you are saying that ये game जो है, ये पूरा tournament दो मैच टूर्नामेंट है, सिर्फ दो मैच जीतनी पड़ेगी इंडिया को गोल्ड निकालने के लिए। और जैसे आपने अभी कहा कि हरिंदर एके हैरी, उनका बार बार ये कहना है कि हमें खास तौर से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि फोर्थ क्वार्टर में एक लेवल स्टेज पे ना जाए, यानी 2 ईच 3 ईच 1 ईच पे अगर आप गए तो कुछ भी हो सकता है। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए और उसमें कोच का कितना बड़ा हाथ होगा? नहीं, आई थिंक जो फल्टन अभी कर रहा है, आई थिंक ही इज प्रोबेबली डूइंग द बेस्ट ही कैन. This is let's put it in a very different way. This is the best team you have, and it's a pretty decent team, except probably one player here and there. I think you have a fantastic team out there which can really do something at Paris. But even for Fulton, the main thing is that हमने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में तो देख ही लिया है कि हम कहाँ पे ठीक हैं और कहाँ पे हम थोड़ा बहुत हिल जाते हैं। मलेशिया की जो 3 गोल 3-1 की जो बढ़त थी उनकी फाइनल में, उस स्टेज से किसी को नहीं लग रहा था कि इंडिया वापस आएगी वहां से, बिकॉज 3-1 चाहे वो हॉकी हो, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में विद 10 seconds to go you can still score the goals. But I think 3-1 in a final sometimes is unbreakable lead. But India played well. They even tightened up the defense. They even used that midfield. They kept 2 or 3 players up front because understand when you're losing 3-1, you open up your forward line. Your defense moves up, which also gives the opposition more chances to score again. I think despite that, India played very well, and I think one should take strength from that particular game. And I think Fulton probably will keep referring to the India Malaysia final to his team when they go to the semi-finals. That is the marker for you. कि भाई अगर आप पीछे भी आ जाते हैं, please don't lose hope. Don't just think that things are going to go wrong. Have faith, play your game. And I think Fulton belongs to that school of thought that that it is time that you play simple, but you play to your strength. And I think if they do that, this is a gold medal that
I really don't see them losing this gold medal. Honestly, I'm being very honest about that. Okay, so that's your prediction that you don't see India losing this gold medal. Now, before we conclude, again, Nihal Singh has sent us an interesting question, which is there are a lot of hashtags here. The main broadcast network is saying कि इस बार 100 मेडल पार, और उसमें सारे बड़े तोप तोप लोग वहां खड़े होके सीना ठोक के कहने कि 100 मेडल तो पार होगा ही होगा। संदीप, आपको लग रहा है पार होगा? नहीं, मुश्किल है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये 100 मेडल पार होगा तो आपको ट्रैक एंड फील्ड में काफी मेडल्स उठाने पड़ेंगे। यानी कि आपके जितने भी आए, आई थिंक 60% और 50% ऑफ योर टीम नीड्स टू बी पिकिंग अप मेडल। देखिए, हिस्टोरिकली तो हर वक्त यही हुआ है कि ट्रैक एंड फील्ड से सबसे ज्यादा आए, लेकिन मैं उस तरह से भी नहीं ले रहा हूँ। मैं मेरा काउंट हर वक्त ओलंपिक्स में और एशियन में वो ब्रॉन्ज और सिल्वर से, चलो ठीक है, आपको आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि आपने ब्रॉन्ज लिया, सिल्वर लिया, लेकिन जो मेडल काउंट होती है वो गोल्ड से शुरू होती है। और लेट अस होप दैट वी गेट मोर गोल्ड मेडल्स एंड मोर सिल्वर मेडल्स, सो दैट मोस्ट ऑफ दीज एथलीट्स हु हैव कम, अब आपने रिले टीम बुडापेस्ट में खुद देखा है कि उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। नाउ इफ द रिले टीम कम्स हियर एंड पिक्स अप अ गोल्ड मेडल, that will be a great fallout. In the last chat, I think you spoke about impact. I think the impact of Budapest should be falling here when you have all your athletes, including Avinash Sable, picking up gold medals. I think वो हमको देखना चाहिए कि हम कितने गोल्ड्स वेरी उठा गुड रहे हैं। पॉइंट। Yes, at the end of the day, अगर 100 हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया सर, मिठाई बांटी जाएगी, इंडियन टीम वापस आएगी, वो एयरपोर्ट पे सब लोग आ जाएंगे और बहुत सही होगा और इम्पैक्ट होगा। मतलब क्यों नहीं होगा, होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, सो वील वेट फॉर द हॉकी मैच टुमारो। थैंक्स संदीप। और जैसे अभी संदीप ने कहा कि 100 मेडल पार तो एक अपनी जगह है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जो गोल्ड मेडल टैली कितनी है, उसको इंडिया को बढ़ाना चाहिए और सारी निगाह उसी पे टिकी रहेगी। वील बी बैक विथ मच मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।